Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? तो बच्चों, चल क्या रहा है यार ये? चल क्या रहा है? मतलब रियली चल क्या रहा है? मतलब एक महीने के अंदर इतनी सारी चीजें। पहले कैटालिसिस का चैनल लॉन्च हुआ भाउल सर का केमिस्ट्री के रिलेटेड 11th एंड 12th। और उसके बाद आई उमंग सीरीज ऑन द 9th एंड 10th चैनल। उसके बाद फिर आ गई हमारी वेदांतु ओलंपियाड स्कूल का चैनल नया आ गया। उसके बाद फिर अब देखो नया इंग्लिश चैनल भी खुल रहा है। वेदांतु जी कर क्या रहे हो आप? तो बच्चों, आई एम बड़ी श्योर कि आपको एक चीज की क्लैरिटी आ रही हुई है कि जो भी कंसर्न्स आपके हैं जहां पे भी है रिलेटेड टू एजुकेशन, वेदांतु वो सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने हमें बोला कि 11th एंड 12th में केमिस्ट्री की जरूरत है, डन। फिर आप लोगों ने हमें बताया कि हमें ओलंपियाड्स के लिए टॉप करना है, डन। फिर आपने मुझे हम लोगों को बताया कि सर प्लीज स्टार्ट द फुल सिलेबस ऑन द चैनल, डन। उमंग, नाउ वी हैव a lot of concerns coming up from a lot of you guys ki sir, let's do something for English also as subject, let's do something for that. So let's people, here is the thing. From the title and the thumbnail, you must have understood ki bhai sahab, there's a new channel coming out from the Vedantu called as We English. I hope really all of you guys are happy about it. The same is here. But we are not still aware कि चैनल में होने क्या वाला है और कौन से मास्टर टीचर पढ़ाने वाले हैं, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस नो कि हम मेरी बात कर लूँ तो ज़्यादा इंग्लिश तो हमें आती नहीं। आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस नो दैट my English is pretty bad out there, not as good as a lot of teachers out teaching on Vedantu's channel. But I hope that you guys can communicate with me well, and you guys can understand me well. I'm pretty sure of that. Okay, jokes aside, but yeah, let's come back to the point and see who is that amazing master teacher who's going to handle the entire channel out there for all of you guys. Let's hear it out from him himself. Let's go forward. Hi guys, what's good everybody? My name is Dheeraj, a master teacher of English at Vedantu Learning Platform. Here I am, I take this opportunity to talk about our new channel that is We Learn English in a nutshell. So stay tuned and let's get started. If you see in this world of dynamic competition, there is only one way to succeed, one way to improve ourselves, that is we need to constantly upgrade our skills. So when we use the word skills, of course, we are talking about to be more confident, to be more dedicated, to be a little more patient, and many more qualities like that. But among all these skills, the most important skill that is required and is the need of the hour today is our communication skills. So when we talk about our communication skills, of course, I'm talking about the most important language today, that is the English language. Now, don't get me wrong, I'm not trying to belittle the importance of other languages, especially in a country like India, there are so many other languages. But then English today is a global language and we cannot ignore the importance of it. Be the field of science, education, technology, everybody has taken up to English language. So what are we going to cover in this channel? What do we have special for you in this channel? If you see English language is used two ways, that is academically and pragmatically as well. So when I say academically, I'm talking about regular topics, that is grammar, vocabulary, writing topics. So of course we will cover all of those topics, all the grammar topics, all the vocabulary topics and writing topics as well. Be it for school level exams, college level exams, university based exams, that's academic side of it. But what matters more is that we sound confident when we speak English. We speak English fluently. That's called the communicative aspect of it. So how about you preparing for your next job interview? How about you trying to become an excellent public speaker? How about you trying to speak English fluently? And the most important, how about you trying to speak as clearly as possible? That is what we call communicative aspect of it. This is exactly the gap is between the academic and the communicative aspect of it. This is what we have closely observed, very closely and diligently observed, and that is what we are going to bridge this gap of academic English and communicative English through this amazing channel that is We Learn English. This is what we call 360-degree approach to learning of English. So stay tuned with us. I hope all of you must be as excited as we are to learn this amazing language, English. Thank you. Okay. सर की इंग्लिश सुनकर दिन में तारे नजर आने लगे मुझे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे शायद जो मैंने कभी सुना भी नहीं होगा। आई एम नॉट श्योर कि जो भी वर्ड सर ने यूज किया आप लोगों ने सुना है क्या सर?
अगर आप लोगों ने सुना है तो बच्चों हाई फाई, कि भाई साहब हमने तो नहीं सुना था। कुछ तो वर्ड था बीच में, सर ने कहा कि इंडल्जेंट समथिंग केम अप, याद भी नहीं रहा, बट या समथिंग केम अप। So people, I think I should start using more English in my communication to better it. But you know the amazing thing part, I'm pretty sure कि as you guys welcomed all the channels of Vedantu out there, you will be welcoming the Vedantu English channel also, isn't it? You will be also welcoming Dheeraj sir as one of the master teachers, like all of you guys supported all of us. जब मैं पहली बार आया था, कितना मस्त सपोर्ट आप लोगों ने दिया था मुझे, तब जाके तो भाई अब इतना कंफर्टेबल हूँ आपसे बात करने के लिए, उतना कंफर्टेबल बन पा, है ना। जो भी नए टीचर्स आए थे हमारे चैनल पे, आपने हर एक टीचर को जितना सपोर्ट दिया, उतना ही मैं चाहूंगा कि आप लोग धीरज सर को भी सपोर्ट दो फॉर हिज चैनल वे इंग्लिश एंड फॉर वेदांतुस चैनल वे इंग्लिश, है ना बच्चों। इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप हो तो हम हैं, अगर हम हैं क्योंकि आप हो, है ना बच्चों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू गाइस प्रोवाइड द सपोर्ट एज यू गाइस कैन। तो मैं ये चाहता हूं आपसे, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस हियर इज कि एवरी स्टूडेंट हु इज अ सब्सक्राइबर टू 9th and 10th channel, please go forward and subscribe to the English channel today itself, and let's cross that first milestone of 10,000 subscribers today itself. Let's cross it, people. Let's cross it. How many of you guys would be doing that? Do let me know in the comment section so that I can very very happily give you hearts anyways, है ना। So thank you so much people, thank you so much for listening to me. तो लेकिन एक और चीज जो ध्यान में अगर आपने दी होगी थोड़ा सा, तो आपको ये समझ में आएगा कि धीरज सर ने ग्रेड्स मेंशन नहीं किए थे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि सिर्फ 9th and 10th के लिए होने वाला है, सिर्फ 6 to 8 के लिए होने वाला है, सिर्फ 11th and 12th के इंग्लिश होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं बोला था उन्होंने। Which gives us a very interesting idea कि ये जो चैनल है ये ग्रेड स्पेसिफिक नहीं होगा, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी। भाई साहब और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। तो यानी कि 1 से 5th ग्रेड का ग्रेड, 6 से 10th का ग्रेड, 11th and 12th का ग्रेड, उसके बाद के भी अगर कोई भी इंसान अगर पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश फ्रॉम बिगिनर लेवल टिल एडवांस लेवल, you can sort out for this particular channel of We English people. Really looking forward myself to go into that, और चुप चुप के कुछ सेशन हम भी देख लेंगे, है ना। और जब हम आएंगे सेशंस देखने के लिए, आप जब लाइव सेशन में रहोगे या तो प्रीमियर वीडियो देख लोगे, मैं आपको बोल दूंगा हाय पीपल व्हाट्सअप, बोलेंगे हम ना, बिल्कुल बोलेंगे। So people, thank you so much for watching this video. As I said, do let me know how many of you guys are subscribing to the We English channel in the comment section. Do let me know about that. ठीक है। With that, people, I'll be ending the session today. Thank you so much. Until we meet next time, this is Abhishek. Just before leaving, we'll be leaving the session with a very interesting thought. Few launches before, when we launched Catalysis, I believe, I said, ki, what do you guys think about a new physics channel? What do you guys think about that? You know, will not say much, but I can tell you the dates are coming really close. The dates are coming really close. And if in case people, you want the dates to come really closer, do let me know in the comments कि कितना जोश है आपके अंदर for new physics channel। अगर जोश ज्यादा दिखा तो शायद हम डेट को ज्यादा क्लोज कर देंगे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है people, so until we meet the next time, this is Abhishek signing off. Take care, stay safe, stay home, stay strong. Bye people.